श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। दशकं 46। अयि देवपुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशये स्तनन्धये परिजृम्भणतो व्यपावृते वदने विश्वमचष्टवल्लवी। पुनरप्यथ बालकैः समं त्वयि लीलानिरते जगत्पते फलसञ्चयवञ्चनक्रुधा तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः। अयि ते प्रलयावधौ विभो क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः मृदुपाशनतोरुजा भवेत् इति भीता जननी चुकोपसाम्। अयि दुर्विनयात्मकत्वया किमु मृत्सा बत वत्स भक्षिता इति मातृगिरं चिरं विभो वितथां त्वं प्रतिजज्ञिषेहसन्। अयि ते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् इति मातृविभर्त्सितो मुखं विकसत्पद्मनिभं व्यदारयः। अपि मृल्लवदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहुतर्पयन् इव पृथिवीं निखिलां न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः। कुहचित् वनमम्बुधिः क्वचिदभ्रं कुहचित् रसातलं मनुजादनुजाः क्वचित् सुराः ददृशे किं न तदा त्वदानने। कलशाम्बुधिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनं स्वपुरश्चरिजार्भकात्मकं कथिता त्वां न ददर्श सा मुखे। विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तथा विधाननः। अनया स्फुटवीक्षितो भवान् अनवस्थां जगतां बतातनोत्। धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन् अद्भुतबाल पाहि माम्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।